Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the SCA. In this lecture, we are going to discuss the third important element of educational psychology, which is the teaching methods. Teachers should take guidance from psychology to select the method of teaching according to the class, age, level, environment, and needs of the students. टीचर को स्टूडेंट्स की एज लेवल के मुतालिक, क्लास, सोशल एनवायरनमेंट, सोसाइटी के मुतालिक और स्टूडेंट्स की ज़रूरियात के मुतालिक टीचिंग मेथड को सेलेक्ट करने के लिए साइकोलॉजी से मदद लेनी चाहिए. Educational psychology stresses on the use of audio-visual aids during the teaching process. टीचिंग या लेक्चर डिलीवर करने के दौरान एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑडियो विजुअल या समय बसरी आलात के इस्तेमाल पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है, क्योंकि ऑडियो विजुअल या समय बसरी जो आलात हैं उसके इस्तेमाल से स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है और स्टूडेंट्स को टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा मदद हासिल होती है. Educational psychology guides that how much teaching material is required and how to present them to the students. Educational psychology हमें ये रहनुमाई फराहम करती है कि लेक्चर डिलीवर करने के लिए कितने मटेरियल्स की ज़रूरत होती है और उसको किस अंदाज से स्टूडेंट के सामने जो है प्रेजेंट किया जाए. Educational psychology provides guidance from introduction to revision and from the use of blackboard and how to develop questions. Educational psychology हमें ये बताती है कि एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट की या पार्टिकुलर टॉपिक की इंट्रोडक्शन कैसे की जाए, उसकी रिवीजन के लिए कौन से मेथड को अपनाई जाए और ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड को किस तरह इस्तेमाल किया जाए और पार्टिकुलर लेसन से, पार्टिकुलर सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन को किस किस अंदाज से पिकअप किया जाए. तो ये थी the third element of educational psychology. Now we are going to discuss the fourth element of educational psychology, which is the learning environment. Learning environment is an important topic of educational psychology. Learning environment या वो environment जिसमें स्टूडेंट्स को या लर्नर्स को बैठाया जाता है, वो जगह जिसमें उनको लेक्चर डिलीवर की जाती है, उसको लर्निंग एनवायरनमेंट कहा जाता है. और इस एनवायरनमेंट को एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है. टीचर्स पर्सनैलिटी, बिल्डिंग, क्लासरूम साइज, वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट, suitable furniture, good administration, curriculum planning play an important role in environmental setup. एक environmental setup के लिए जिसमें स्टूडेंट को पढ़ाई की जाती है, उनमें कौन कौन सी चीज़ शामिल है या किन किन चीज़ों को तरजीह दी जाएगी. इसमें उस्ताद की शख्सियत, बिल्डिंग या इमारत को, क्लासरूम की साइज़ को, वेंटिलेशंस को जिसमें प्रॉपर एयर की अरेंजमेंट की जाए, प्रॉपर लाइटिंग की अरेंजमेंट हो, सही फर्नीचर हो, ठीक ठाक एडमिनिस्ट्रेशन हो, सही तरह से करिकुलम प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोसीजर मौजूद हो और इसकी साथ साथ इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाएगी, ये सब चीज़ें मिलकर एक लर्निंग एनवायरनमेंट को बनाता है. सोशल एनवायरनमेंट and family background are also discussed and considered in environment.
لرننگ انوائرمنٹ میں سوشل انوائرمنٹ کو جس سوسائٹی سے اسٹوڈنٹس بلانگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی فیملی بیک گراؤنڈ کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو یہ تھی فورتھ ایلیمنٹ آف دا ایجوکیشنل سائیکالوجی. Now we are going to discuss the fifth element of educational psychology, which is guidance and counseling. Several students face different kinds of problems from education. Teachers, their colleagues, emotional, social, and tense relationships. Students کو سبق کے دوران یا تعلیمی اداروں میں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں کئی ایک مشکلات ٹیچرز کی طرف سے بھی ہوتی ہے، اپنے کولیگز کی طرف سے بھی ہوتی ہے. اس میں کچھ ایموشنل یا مشکلات بھی شامل ہوتی ہے. سوسائٹی بھی کبھی کبھار اسٹوڈنٹس کے لیے پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپ بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. انٹینس ریلیشن شپ میں زیادہ تر پیرنٹل ریلیشن شپ شامل ہوتی ہے، جب والدین اپنے بچوں کو پراپر توجہ نہیں دیتی یا ان کے ساتھ جو ہے ہارش رویہ رکھتے ہیں، تو اس کو ٹینس ریلیشن شپ کہا جاتا ہے. Therefore, educational psychologists provide help through child guidance clinics, guidance and counseling. اس پرابلم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ جو ہے طلباء کو گائیڈنس کلینک سے یا انڈیویجول گائیڈنس سے یا کونسلنگ سے اسٹوڈنٹس کو مدد فراہم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فار کریمنل مائنڈیڈ ہارش ڈل کوالسم bewildered and backward children, psychological help is provided through psychologists, brain specialists, and social workers jointly. جو اسٹوڈنٹس کی ذہنیت جو ہے وہ کریمنل مائنڈ ہو یا اس کا رویہ جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہو، یا وہ اسٹوڈنٹ جو کون ذہن ہو، یا وہ اسٹوڈنٹ جو بہت زیادہ جھگڑتے ہو. بیویلڈر اسٹوڈنٹس حواس باختہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کی توجہ جو ہے وہ سبق کی اپنی پڑھائی کی طرف نہیں رہتی. اس کے ساتھ ساتھ بیکورڈ چلڈرنز جو ہیں، پسماندہ بچے، ان کو نفسیاتی مدد جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کے ذریعے بھی فراہم کی جا سکتی ہے، یا برین اسپیشلسٹ یا نیورولوجسٹ کے ذریعے بھی ان کو شاید کہ کچھ نیورولوجیکل پرابلمس ہوں تو اس کو نیورولوجسٹ سے بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اس طرح سوشل ورکرز بھی ان کو مدد فراہم کر سکتے ہیں. تو دیز آر دی first 5 elements of educational psychology. In this lecture we have discussed 3 and we have earlier discussed 2, the first 2 elements of educational psychology. So I hope you have understand these elements, and please like the video, subscribe to channels, and comment and share with your friends. Thank you.